Commissioner of Police. Respected near and dear sir, Ma Nirmala. Particularly respected officials of His Excellency Vice President of Office, special day in my life, this in his right age. His voice is tireless and his journey is relentless, just as his book describes. So I am really Thank you, sir. Now I request His Excellency Professor Ganesendra to address the gathering. Please, sir. भारत के उपराष्ट्रपति महोदय श्रद्धेय श्रीमान वेंकैया नायडू जी, परम स्नेही मित्र सांसद अच्युत सामंत जी, जिसको मैं स्नेह से प्यार से एलियन कहता हूँ, एलियन कहता हूँ, who is on this line to not only to serve the humanity but rather to worship the humanity is there. और परम स्नेही मित्रों, इस छोटे से जीवन में जो कि प्रारंभिक जीवन है, उसमें इतनी बड़ी सादा, इतने बड़ा कहानी लिखने ना कोई साधारण बात नहीं है। मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे ठक्कर बप्पा की याद आती है, जिन्होंने गिरिवासियों के लिए, जंगलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम किया। मैं केवल 3-4 चौपाइयाँ मानस की बताकर कि माँ क्या होती है, उससे अपनी बात को समाप्त करता हूँ। काकुसुंडी गौरव को कहते हैं उत्तराखंड में, उधर माज सुनु अंडा जलाया, देखें वो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोहिन चतुरा अनंत गौरी सा, अग्नि पूर्णन रवि रजनी सा। मैंने भगवान राम के पेट में घुसकर देखा, अरे वो ब्रह्मांड देखे, ब्रह्मा विष्णु महेश आंतरिक देखे, दुनिया भर के सूर्य देखे। एक और स्थान पर भी कहते हैं पद पाताल शीस अधाम। मुझसे जब कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान जगन्नाथ के तो बाल भी नहीं दिखते, पैर भी नहीं दिखते, हमने कहा पद पाताल में है, शीस ब्रह्मलोक में है। पद पाताल शीस अधामा अपर लोक अंगंग विश्राम, प्रकृति विशाल भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला, जा सुघ्राण अश्वनी कुमार, निशि और दिवस निमेश कृपा, श्रवण दिशा सुनि वेद वखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी, सांस उनका मारुत है, बिंद है। तो ऐसा सर जिसके पेट में इतना सब कुछ है, उसको पेट में रखने का गौरव अगर किसको धरती पर प्राप्त है तो वो मां है। इसलिए व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के लोग, ऐसा भी भगवान के जब चाहे इस युग के मुताबिक धरती पर माता ने उसी प्रकार के पुत्र को जन्म दिया है। तो मां का कल्पना करना संभव ही नहीं। वेदों में श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकलने के बाद, कंप्लीट में से कंप्लीट निकलने के बाद, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकलने के बाद फिर भी इन्फिनिटी बचा रहे, वही परमात्मा हो सकता है। तो मां से ही पूर्ण से पूर्ण निकलता, उसके बाद भी पूर्ण बचा रहता है। तो इस धरती पर मानव जाति में या जितनी भी स्पीसीज है उसमें मां से बढ़कर कोई खुदा, कोई भगवान, कोई अल्लाह हो नहीं सकता है। ऐसे में अच्युत सामंत का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई कि आपने धरती पर अपनी मां को आज भी अपने साथ रखा हुआ है, और ऐसा पुत्र मां को जब चाहे उसके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। कभी जननी में हम जगत जननी को देखते हैं, अब जगत जननी को देखेंगे तो जननी को देखने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ वंदे उत्तर
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಣೇಶ್ ರಾಜ್ಜಿ, ಒಡಿಶಾರ ಮಾನ್ಯಬರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ, ಸಂಸದರ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಚ್ಯುತ್ ಸಾಮಂತ, सम्माननीय अतिथिगणों, भाई भवानी बाने, समस्त को नमस्कार. I am really happy today to be present in this small function to release the book Nilima Rani, My Mother, My Hero, written by one of our colleagues in Parliament, a social worker, Sri Achyut Samanta. Generally, we read biographies of great leaders, entrepreneurs, and explorers. But it is heartwarming today that we are releasing the biography of a mother, because it is mother who makes a man or a woman great through her upbringing and values. Friends, when I was going through the pages of this book, I could not but feel enormous respect and reverence of a mother who fought every odd single-handedly to raise her 7 children. Despite abject poverty and lack of resources, she ensured that all her children got good education and became responsible citizens. I was moved by the account of Dr. Achyut Samanta's father's death. Despite such life-shattering experiences, Srimati Nilima Rani ji never wavered from her humane approach towards the poor and downtrodden and kept on working for their upliftment. I am very happy to know that with the help of her sons, she turned her native village, Kalarabanka, into one of the first smart villages of its kind in the country. It's really great of her to think on those lines at that time and develop her native place. This is really inspiring. It is my appeal to all the successful men and women that they should never forget their roots. That's why I say, whenever I go to any place, I tell people, particular youngsters, Matru Murti, Matru Bhasha, मातृभूमि को कभी भूलना नहीं चाहिए. Should never forget your mother who has given you this beautiful birth, and also the Janma Bhumi, the native place to which he belongs to. See how his mother developed her native place into a smart village. And also Matru Bhasha. We should never forget, ignore our mother tongue, because mother tongue is the language which has come from mother's womb. So I appeal to all, please keep these things in mind, respect, revere the mother forever. Second, do something back home to your native place. Third, feel proud and propagate and speak at home, the neighborhood, in your mother tongue, and then propagate. I also appeal to Dr. Achyut Samanta to bring this book in Oriya also, so that the people here, they will be able to understand better. The common people, they know their mother tongue and the vernacular language. I have been telling everywhere that we should promote and protect and propagate mother tongue everywhere. Even in education, even in courts, even in administration, we should promote our mother tongue. Nothing wrong in learning English or other languages.
first we must promote our mother tongue. I am very happy Dr. Achyut Samanta, in spite of rising to these heights through his social service, particularly for the cause of tribals, downtrodden, taking care of their education, their health, and understanding their abilities and promoting them, has thought it fit to write the biography of his mother, who was responsible not only to give this beautiful birth, but also this inspiration, do service to the people. That's why I'm happy that he brought out this publication. Though it is a small presentation, I have accepted this because writing mother's biography is really a great thing, and it will be inspiring for others also to always remember their mother and parents and do something in memory of them, and brought out those memories in the form of a booklet which will be useful for the younger generation. My compliments to you, Dr. Achyut Samanta, once again, and also my compliments to the publishers, Rupa Publications, for bringing out this wonderful publication. I suggest to the readers, youngsters, to read this book and understand the spirit behind what Samanta has written, the greatness of his mother. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind.